Pemphigus vulgaris. It is a chronic disorder of the skin and oral mucous membrane characterized by blister, bullae formation, and it is autoimmune disorder and associated with IgG antibiotic and HLA A10 एंटीजन. यहाँ पे ब्लिस्टर और बुलेई फॉर्म्स करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन. ठीक है. रिस्क फैक्टर्स का मोर कॉमन इन मिडिल और ओल्डर एडल्ट्स ऑफ ऑल रेसेस एंड बैकग्राउंड. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका? ऑफ सर्टन ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन. ठीक है. कैप्रोपिली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. द डिजीज इन द डिजीज. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ब्लिस्टर्स अपीयर इन माउथ एंड स्कैल्प. कहाँ पर? जो ब्लिस्टर है वो माउथ और स्कैल्प पे देखने को मिलते हैं. ठीक है. ऑल रेसेस में ये कॉमनली दिखने को मिलता है. फिर आता है अल्सरेशन ऑफ ब्लिस्टर. अल्सरेशन होता है ब्लिस्टर्स का. ठीक है. ये प्रेजेंट होते हैं स्कैल्प पे फर्स्टली एंड देन स्प्रेड इनटू क्रॉप्स और वेव टू लार्ज एरिया, है ना. तो इस जगह पे होते हैं. फिर आता है अल्सरेशन ब्लिस्टर्स में क्या होता है इस कंडीशन में? प्रेजेंट ब्लिस्टर इन एपिडर्मिस एंड कॉज डर्मिस सेल्स टू सेपरेट अबव वेसल लेयर. यहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है ब्लिस्टर का. ठीक है. और जो कि प्रेजेंट होते हैं. फिर ब्लिस्टर फ्रॉम एपिडर्मिस. ठीक है. एंड कॉज डर्मिस सेल सेपरेट अबव द ब्लिस्टर लेयर. जो बेसल लेयर से सेपरेट होती है उसको हम कहते हैं. ठीक है. फिर आता है पेन इन लेजन प्रेजेंट. लेजन्स की वजह से पेन हो रहा है. ठीक है. वो प्रेजेंट होता है. उसके बाद pain in lesion Nicholsi sign and present in pressure on blister to spread to the adjacent skin. Septicemia क्या आता है? Occur due to suppressed infection and staphylococcus aureus, fluid of electrolyte imbalance due to fluid loss की वजह से. फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है इसका? इम्यूनोफ्लोरेसेंट microscopic determining presence of IgG antibiotic and epidermis and serum. Skin biopsy taken to check the presence of acantholysis. Acantholysis. ठीक है. ये डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में गया. फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. ये मेडिकल मैनेजमेंट में आया. ठीक है. सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज एजिथ्रोप्रोइन, साइक्लोफॉस्फोपेमाइड और are prescribed. Present in instructed to taken medicine after meals and antacids should be taken to prevent gastric ulcer. Weight, blood glucose, blood pressure and fluid balance. Edema should be checked to alleviate side effect of steroids. फिर आता है प्लाज्मा फेरेसिस. It is used to remove the antibiotics. ठीक है. एंटीबायोटिक्स ऑफ फ्रॉम सीरम. सीरम से रिमूव करने के लिए चाहिए रहता है.
ओके। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, रिलीफ एंड डिस्कम्फर्ट के लिए बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, केयर प्लान बनाना है, ठीक है। केयर प्लान में रिलीफ और डिस्कम्फर्ट के लिए बनाएंगे ओरल हाइजीन में फ्रीक्वेंट माउथ वॉश, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिमूव बेरीज एंड सूदीज अल्सर, ठीक है। स्कैल्प, चेस्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन शुड बी केयरफुली एग्जामिन फॉर ब्लिस्टर and avoid commercial mouthwash. Avoid commercial mouthwash. Lip should be kept moist and application lip balm अप्लाई करें। माउथ मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड एनवायरनमेंट एयर कूल मिस्ट, ठीक है, इस तरीके। ओके। एंड enhance skin healing, cool wet dressing or bath provided. Skin should be dried properly after bathing, and large amount of non-irritating powder sprinkling to allow the free movement। पाउडर स्प्रिंकल करना है फ्री मूवमेंट के लिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है कीप द पेशेंट वार्म टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। पेशेंट को वार्म रखना है ताकि उससे हाइपोथर्मिया ना हो सके। रिड्यूस एंजाइटी एंड इम्प्रूव कॉपिंग, यहाँ पे रिड्यूस करना है एंजाइटी को, ठीक है। एंड लिसन द डबल एंड वरीज ऑफ पेशेंट, लिसन द डाउट्स एंड वरीज ऑफ पेशेंट। जो डाउट्स और उसकी वरीज को पेशेंट की उसको समझना है, ठीक है। Reduce anxiety and improve coping. Listen to the doubts and worries of patient. Give sufficient time to express feeling. Reassure the patient and family members. Involve family members in a care as it provide to support to the patient. Complications क्या है? Infection and sepsis by Candida albicans is Staphylococcus aureus, fluid volume deficit due to oozing the fluid from ruptured blister. Role of nurse क्या है? Observe sign of infection like fever, chills, and systemic infection, topical infection, environmental sanitation maintained to reduce the infection. Mopping should be done instead of dusting. फिर आता है strict intake output chart maintain। Cool, non-irritating fluids should be given to person to maintain oral intake, जैसे कि apple grape juice, high calorie, high protein milkshake should be given to patient to maintain energy level। ये सारा कुछ हम देंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोरियासिस। प्रोरियासिस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रूल्स ऑफ नर्स बताया मैंने कि ऑब्जर्व करना है ना, कैसे एनवायरमेंटल सैनिटेशन वगैरह देना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, 2 मिनट हम रिविजन कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है वेगन वगैरह का। इसमें ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, कैरेक्टराइज बाय ब्लिस्टर बुलेई फॉर्मेशन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विद आईजीजी एंटीबायोटिक्स एंड HLA-A10 एंटीजन की वजह से। रिस्क फैक्टर्स का मिडिल टू ओल्डर एज में होता है, रेसिस बैकग्राउंड में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स की वजह से।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि ब्लिस्टर अपीयर इन माउथ, स्कैल्प फर्स्टली, spread in crops and waves large area. Ulceration of blister is formed to epidermis caused by dermis cells separate above the basal layer. फिर आता है pain and lesion. फिर septicemia occur due to the separated of Staphylococcus aureus. Diagnostic evaluation में immunofluorescent microscopic determine the presence of IgG, antibiotics in epidermis, skin biopsy taken to check the presence of ankylosis. मेडिकल मैनेजमेंट में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ट्रीटमेंट देंगे, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देंगे। ठीक है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे मेडिसिन और मील्स के बारे में। ठीक है, वेट, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेंगे, अगर एडिमा तो नहीं है वो चेक करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो प्लाज्मा फेरेसिस देंगे टू रिमूव एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द सीरम, सीरम से अलग करने के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ नहीं, ओरल हमको रिलीफ और डिस्कम्फर्ट देना है ब्लिस्टर से, तो उसमें हमको ओरल और स्कैल्प का हाइजीन मेंटेन करना है, लिप को ड्राई नहीं होने देना है, इनहेंस स्किन हीलिंग का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कॉम्प्लिकेशन में हम इन्फेक्शन, सेप्सिस, कैनेडिया एपिडेंसिस, स्टाफाइलोकोकस एनेरीज, fluid volume deficit due to oozing of fluid from ruptured blister, ये चीज़ देखेंगे। फिर आता है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स में ऑब्जर्व साइन एंड इन्फेक्शन लाइक फीवर, चिल्स, सिस्टमिक एंड टॉपिकल इन्फेक्शन, रेडनेस, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटेन टू रिड्यूस इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। राइट, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ओरेसिस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं strict intake output, start maintain and cool non irritating fluids भी हम क्या करेंगे देंगे, should be given to the person to maintain oral hygiene और apple or grape juice। हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन देंगे, जैसे कि मिल्क शेक शुड बी गिवन टू पेशेंट एंड मेंटेन एनर्जी लेवल, ये सब कुछ हम देंगे, है ना। सो पोरियोसिस में, psoriasis is a chronic non-infectious recurrent erythematous inflammatory disorder involving creatine synthesis and characterized by to raise the radiant round circumcised plug over the salivary white scalp। ये देखो इस तरीके से, ये हमारा स्कैल है, स्कैल्प पर ये क्रेटिन की हेल्दी स्किन है और ये पोरेसिस ऐसे पूरा झड़ता है। ठीक है, प्लग जम जाता है और स्किन भी इन्फ्लाम्ड हो जाती है इस तरीके से। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, एक हेल्दी स्किन, और ये पोरियोसिस की कंडीशन है, दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ risk factor family history जैसे genetic predisposition contributes the disease which caused by overproduction of creatine. Environmental factor जैसे seasonal changes, sunburn, sunlight contribute to the disease occurrence. उसके बाद आता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन जैसे कि सीरियस विड्रॉल ऑफ ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, lithium, chloroquine also trigger the onset of disease. फिर आता है Coburn's reaction में lesions result from trauma after surgery जैसे excrotion also participate the occurrence of disease. फिर आता है anxiety and stress also aggravate the disease. जिसमें आता है healthy skin जैसे creatine layers, epidermis, sweat glands, hair follicles, है ना, subcutaneous layer, ये सारी चीजें. फिर आता है पोरियसिस में स्किन क्या हो रही है, इन्फ्लाम्ड हो रही है, राइट. एंड फिजियोलॉजी है. नॉर्मली
Keratinocytes, epidermal cell migrate from the basal cell of the stratum corneum. It takes 14 days for sloughing in his disease. Epidermal cell or travel from the basal cell to the stratum corneum 4 to 7 days of the cast within 3 to 4 days. Increase the number of basal cell passage in there, and normal cell maturation and growth does not occur, lead to erythema and lesions due to the increase of vascularity and cytokinesis. So that's it for today. Tomorrow we'll continue from the pathophysiology and clinical manifestation, diagnostic evaluation, and moreover. Okay. Thanks for watching this video. If you have any doubt regarding this, do let me know in the comment section. Thank you.